like a Hellcat. Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do the nitric acid. So let's get started. I hope you will like the content and do watch it till the end. So first we'll start with the catalytic oxidation of ammonia. That is the manufacture of nitric acid हम कैसे करते हैं. So that's the process is OSTWALD process. So catalytic oxidation of ammonia इसका first step है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी रिएक्ट द अमोनिया विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज प्लैटिनम at the temperature of 800 degree Celsius, which will give us the products that are nitric oxide, water and heat. This is an exothermic reaction. So this is the only exothermic reaction in the whole process. So we can ask a question that name a reaction of the manufacture of nitric acid which is exothermic. So we'll give that ammonia plus oxygen with the platinum as a catalyst, and 800 degrees Celsius will give you the nitric oxide plus water and heat. Plus heat we'll write on the right hand side. Then comes the second step. So we do the oxidation of nitric oxide. अब हमने जब अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया, सो वी गेट द दैट 4NH3 दैट इज द गैस प्लस 5O2 गैस विल गिव अस द निट्रिक ऑक्साइड. अब ये निट्रिक ऑक्साइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे फर्दर, देन वी गेट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज अ रेडिश ब्राउन fumes. So this is done in the oxidation chamber at 50 degrees Celsius temperature. Then what happens is, then comes the absorption of nitrogen dioxide in water. अब further nitrogen dioxide को हम water के अंदर dissolve करते हैं ताकि हम अपना प्रोडक्ट दैट इज़ जो हमने रिवर्स की है डीकम्पोजिशन ऑफ निट्रिक एसिड को, जब निट्रिक एसिड को हम हीट करते हैं, सो वी गेट द प्रोडक्ट्स एज वाटर, nitrogen dioxide and oxygen. So here we'll do the reverse of the decomposition, that we'll mix nitrogen dioxide, water and oxygen to get nitric acid. अब आपने इन सारे प्रोसेसेस के अंदर देखा है कि हर एक के अंदर हमें ऑक्सीजन यूज़ हुई है. सो इट्स essential that we take the higher ratio of air, so that because air हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो सिर्फ उसका 1/5 पार्ट ही है इसलिए. और quartz is an acid resistance and when packed in the layers it helps in dissolving the nitrogen dioxide uniformly in water. So quartz भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. So further हमें आगे catalytic chamber से हम heat exchanger, then comes the oxidation chamber जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं. Then at last comes the absorption tower in which we mix nitrogen dioxide with water and oxygen to get the nitric acid. Then we are done with the nitric acid the formation, how we can form it. Then comes the laboratory preparation. अब वहाँ पे तो हमने मैन्युफैक्चर किया, अब लैब्स के अंदर कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो फॉर दैट we take apparatus in which we use either niter, that is potassium nitrate, or sodium nitrate. Then we mix them with the sulfuric acid, that is concentrated. Then we heat them in less than 200 डिग्री सेल्सियस. अब लेस देन क्यों करना है, क्योंकि अगर हम एक्सीड करेंगे टेम्परेचर, सो विल नॉट गेट द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स. बिकॉज कहाँ पे हम अगर कम टेम्परेचर लेते हैं दैट इज़ लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, सो द प्रोडक्ट्स बिकम sodium hydrogen sulfate, that is sodium bisulfate or potassium bisulfate plus nitric acid. बट अगर हम एक्सीड करते हैं टेम्परेचर, सो हमें फर्दर क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक सोडियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट. अब ये जो हमें पता है बाइसल्फेट्स आर सॉल्युबल, सो दे डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द apparatus, and the sodium sulfate, they form a thick crust, the thick layer on the lining of the apparatus, which is very difficult to remove it and the apparatus gets waste. And moreover अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी है. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, दैट निट्रिक एसिड की डीकम्पोजिशन कैन टेक प्लेस. सो विद दैट वील ओनली एंड अप विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन. ओके, so all glass apparatus is used and we does not use the concentrated HCl क्योंकि हमारा जो HNO3 है that is a volatile acid, तो volatilize कर जाएगा. अगर हम HCl यूज़ करेंगे
in place of the concentrated sulfuric acid. So HCl will also volatilize and they get mixed together, so will not land up in the appropriate product. इसलिए हम एक नॉन वॉलेटाइल एसिड दैट इज द कंसनट्रेटेड H2SO4 हम यूज़ करते हैं न्यूट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के अंदर. सो द फाइनल रिएक्शन बिकम्स दैट सोडियम नाइट्रेट or potassium nitrate plus the concentrated, that concentration has to be written very importantly, that concentrated H2SO4 on the temperature that is less than 200 degrees Celsius gives us the sodium bisulfate plus the nitric acid. And this nitric acid को हम further cold water के साथ condense कर लेते हैं. अब ये जो हमारे पास प्योर एसिड आया ना, तो ये प्योर तो हो है, पर जो प्योर होता है वो कलरलेस होता है. बट दिस एसिड विच इज़ ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी इज स्लाइटली येलो. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा हीट उधर भी पहुँच जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा, little bit decomposition of HNO3 can takes place, which will give us the product that are nitrogen dioxide, oxygen and water. So nitrogen dioxide may mix with the HNO3 giving just a little yellow color to it. Then is the OSTWALD process, which we have already discussed in the manufacture of nitric acid, in which we have 3 steps, that is the catalytic oxidation, the oxidizing of the nitric oxide that you can see in the second chamber, and then comes the absorption of the nitrogen dioxide, which further when we mix the nitrogen dioxide जो हमें NO plus O2 at the temperature of 50 degree Celsius करके मिला है, उसे हम water के अंदर mix करते हैं, so that we can get the acid that is aqueous HNO3. Then comes this is a flow chart. You can just take a screenshot of this, that what happens in the catalytic chamber, then the heat exchanger, oxidizing chamber at the 50 degrees Celsius, then absorption chamber, and then finally we get our nitric acid. Then comes the physical properties. So pure जो है वो तो colorless होता है, okay. Then it has बट कमर्शियल जो निट्रिक एसिड है वो थोड़ा येलोइश ब्राउन होता है कलर में. ठीक है, सो द ऑर्डर इज सफोकेटिंग स्मेल, द टेस्ट इट इज़ लिटिल बिट एसिडिक ना, सो वी इट हैज़ अ सॉर टेस्ट, मतलब खट्टा होता है इसका. जो नेचर है इट इज़ एसिडिक, सो टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड. Then comes the density. So density is 1.54 grams centimeter cube. Boiling point is it boils at 86 degrees Celsius and melts at minus 42 degrees Celsius. Then comes its solubility, that it is highly soluble in water in all proportions. Now comes the properties of nitric acid, that it is a strong acid and forms the nitrates with the bases and basic oxides and decomposes the carbonates. So अब इसकी reactions जब हम with the basic oxides, for example अगर हम NaOH से करते हैं, so it will be land up with the salt that is aqueous, that is the जो उसका salt हमने base का use किया उसी का corresponding हमें nitrate मिलेगा plus the water. So here you can see that this is a neutralization reaction in which a acid that is HNO3 plus a base gives us a salt that is a nitrate plus water. So next we have its reaction with the carbonates and bicarbonates. When it reacts with the carbonates and bicarbonates, what happens is carbon dioxide की liberation होती है. So we can ask a question that name a gas which is liberated when nitric acid reacts with a carbonate or a bicarbonate. So that is carbon dioxide. So now we are having the properties which is like जब हम उसे that is a strong oxidizing agent and oxidizes the other metals, non-metals and metalloids into their oxides or oxyacids and it will get reduced. reduction हो जाती है उसकी. वो reduce किस में होता है, NO2 NO या फिर N2O में reduce हो जाता है, depending upon कि क्या उसकी concentration या फिर कौन सा substance वो oxidize कर रहा है. So when a non-metal plus an acid which is concentrated HNO3, it will give us the oxidized product plus water and the nitrogen dioxide. Then comes the uses of the nitric acid. So it is used to purify the gold. Okay, so it acts as a rocket fuel oxidant. It in preparation of the fertilizers also it is used in like calcium nitrate, ammonium nitrate, nitrochalk, basic calcium nitrate. Okay, then it has some basic operations of the nitric acid. We get is that
here it's just the formation of the nitric acid. Like in a mixture we take the air, ammonia, and then a converter in which we get the NO, then again cooler. This is just the repetition of the first part, how we can prepare. Here it is. So absorption tower, you can see what's the reaction. So that was all for the today's video. I hope you like the content. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.